So this is the question number 3 from CBSE paper midterm 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question a string has been given to you which is named as इसका data क्या है आपका welcome, and it has been asked कि based on this slicing what will be the output of this particular question. Okay, तो if you recall slicing कैसे होती है आपकी slicing के अंदर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं start, stop and step. तीनों ही क्या होते हैं आपके ऑप्शनल इन नेचर होते हैं, यानी कि अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो उनकी क्या वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट, इट इज जीरो, इट इज एंड ऑफ द डाटा या एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है +1. नाउ अगर मैं बात करूं वैल्यू कैसे ट्रेवल करती है स्टार्ट टू स्टॉप -1. सो इन दिस केस अगर मैं देखूं वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इंडेक्स नंबर 1, यानी कि अगर तो पहले मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूं 0 1 2 3 4 5 and 6. It means it contains 7 elements starting from index 0. So it is starting from index number 1. Since no stop value has been given, तो कहां तक जाएगा आपका end of the string तक, and step value क्या given है 2. तो first value would be E, then it will go for C, and then it will go for M. Hence the right answer would be E, C and M. Hence the right answer would be option number D. Okay. Similarly, based on the slicing, we have practice question for you. Take a note of this question and comment your answer in the comment box. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Thank you for your time.